So we start, sir. Yes, sir, we'll start. Good evening, all. Namaskar. எல்லாருக்கும் வணக்கம். வணக்கம் Welcome sir. to BAL Bhajan Sandhya. So let us start today's BAL Bhajan Sandhya. First with Bhajan Karyakram. First வந்து பஜன் காரியக்ரமோட ஆரம்பிப்போம். முதல்ல இன்னைக்கு பாட போறவங்க the first singer today is Kumar Vishal and Kumar Vaibhav. Rameshji, they actually chant shloka, but they have not yet come. Okay, okay. Next is Srimati Beena ji. She's there. Yeah, yes. Good evening. Good evening. Video Can you hear me? Yes, yes. Yeah. Just Hindi bhajan. Yeah. 1 minute. Yeah. कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना तुम राम रूप में आना तुम राम रूप में आना सीता साथ लेके धन साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना तुम श्याम रूप में आना तुम श्याम रूप में आना राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना तुम शिव के रूप में आना तुम शिव के रूप में आना गौरी साथ लेके डमरू हाथ लेके गौरी साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना तुम विष्णु रूप में आना तुम विष्णु रूप में आना लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना तुम गणपति रूप में आना तुम गणपति रूप में आना रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद जी. बहुत सुंदर गाया आपने. वेरी नाइस. नल्ला पाड़नी. थैंक यू सर थैंक यू
Our next participant is Asha Mehra ji. श्रीमती आशा मेहरा जी, आप अनम्यूट करके गाइए। सुनाई दे रहा है? हाँ जी सुनाई दे रहा है अभी। भगवान राह दिखा, भगवान भगवान राह दिखा, भगवान तेरे चरणों में अर्पण हूँ, तेरे चरणों में अर्पण हूँ। सुन ले कृपा निदान, सुन ले कृपा निदान, भगवान राह दिखा, भगवान भगवान राह दिखा, भगवान। कब से भटक रहा हूँ स्वामी, गहरा है अंधियारा, युगों युगों से प्यास तुम्हारी, फिरता मारा मारा। अब तो दर्शन दे दो भगवन, अब तो दर्शन दे दो भगवन, ले लो जीवन प्राण, भगवान राह दिखा, भगवान भगवान राह दिखा, भगवान। तेरा साया जिस पर होए, वो बंधन से छूटे, तेरा साया जिस पर होए, वो बंधन से छूटे, तेरा प्यार मुझे मिल जाए, चाहे दुनिया रूठे। ना मांगू दुनिया की दौलत, ना मांगू दुनिया की दौलत, दे दो दया का दान, भगवान राह दिखा, भगवान भगवान राह दिखा, भगवान। मीठा बंधन है प्रभु तेरा, कोई भी बंध जाए, मीठा बंधन है प्रभु तेरा, कोई भी बंध जाए, ये मन मंदिर तेरा भगवन, निज रंग में रंग जाए, फिर नहीं डर दुनिया का चाहे, फिर नहीं डर दुनिया का चाहे, मिले मान अपमान, भगवान राह दिखा, भगवान भगवान राह दिखा, भगवान। तेरे चरणों में अर्पण हूँ, सुन ले कृपा निदान, भगवान राह दिखा, भगवान भगवान राह दिखा, भगवान। बहुत सुंदर जी, ரொம்ப நல்லா பாடுறீங்க। थैंक यू, नंरी, थैंक यू आशा मेहरा जी। अभी अगला पार्टिसिपेंट है लितन्या वर्षा। शी इज नॉट हियर, आई थिंक। नहीं है। She's here, she's here. ओके ओके, नमस्ते, नमस्कार। Namaste, namaste, namaskar. यस लितन्या,
1 minute, ma. 1 minute. Can everyone can hear me? Yes, 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 sir. Shall I start, sir? yes. குறை ஒன்றும் இல்லை Wow. மறைமூர்த்தி கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கோவிந்தா குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கோவிந்தா கண்ணுக்கு தெரியாமல் நிற்கின்றாய் கண்ணா கண்ணுக்கு தெரியாமல் நின்றாலும் எனக்கு குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா வேண்டியதை தந்திட வெங்கடேசன் என்றிருக்க வேண்டியது வேறில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா மணிவண்ணா மலையப்பா கோவிந்தா கோவிந்தா திரையின் பெண் நிற்கின்றாய் கண்ணா கண்ணா திரையின் பெண் நிற்கின்றாய் கண்ணா உன்னை மறையோதும் ஞானியர் மட்டுமே காண்பார் திரையின் பின் நிற்கின்றாய் கண்ணா என்றாலும் குறை ஒன்றும் எனக்கில்லை கண்ணா என்றாலும் குறை ஒன்றும் எனக்கில்லை கண்ணா குன்றின் மேல் கல்லாகி நிற்கின்ற வரதா குன்றின் மேல் கல்லாகி நிற்கின்ற வரதா குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா களினாளுக்கு இறங்கி களிலே இறங்கி சிலையாக கோயிலில் நிற்கின்றாய் கேசவா களினாளுக்கு இறங்கி களிலே இறங்கி நிலையாக கோவிலில் நிற்கின்றாய் கேசவா குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா யாதும் மறுக்காத மலையப்பா யாதும் மறுக்காத மலையப்பா உன் மார்பில் ஏதும் தர நிற்கும் கருணை கடல் அன்னை என்றும் நீரிந்திட ஏது குறை எனக்கு என்றும் நீரிந்திட ஏது குறை எனக்கு. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. ரொம்ப நன்றி, நல்லா பாடுனீங்க, சூப்பர். 1 minute ரமேஷ் ஜி. லித்தனியா உங்களை பார்க்கிறதுக்கு அவ்வளவு நாட்கள் பிறகு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. Good to see you back. Please keep visiting regular. Okay? Yes sir. Nandri. Ramesh ji, that Vishal and Vaibhav have come, that Shlokapi boys. Okay, sure. Yes, next participant Kumar Vishal. I think. Sir, Yeah, you can switch on your video. sir, I will sing And next sing week, your- sir. I went to my relative's home. I just came now. Okay. Oh, No problem, you can sing now. Okay, fine, right. Our next participant is Kumari Purvaja. Yes, sir. Padma. गजाननयुतं गणेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं भजामि सततं शूरेश्वरं श्री भजामि सततं
सुरेश्वरं श्री आचेन्द्र पूजित विघ्नेश्वरम् आचेन्द्र पूजित विघ्नेश्वरम् अनादि सनुत पद पद्मकरम् कुंजर पंचित चतुराकरं गुरुगुहात्मजं प्रणवाकारं गजाननयुतं गणेश्वरम्. Thank you, sir. Very good. Nalla paadnீங்க Purvaja, very nice. It was very good. Thank you very much. Our next participant is Srimati Uma Maheshwari ji. Puruja, Oma vandirukama? I think just procedure. We'll wait for her. Yes. Our next participant is Kumari Lakshmi Lochana. वरवीणा मृदुपाणि वनमोहलोचनराणि सुरुचिरपं परवेणि सुरनुतकल्याणि निरुपम शुभगुणलोला निरत जया प्रदशीला वरदा प्रिय रंगनायकी वांछित फलदायकी सरसीजा सन जननी जय 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 वरवीणा मृदुपाणि. Thank you, sir. Thank you very much, Lakshmi Lochana. Very nice. Our next participant is Raaj Ramchand ji. Uma Maheshwari irukangla? No? Okay. Hindi lo or bhajan? Yes, sir. दो रंग सर. Sorry. Ramesh ji, Purvaja's mother Uma Maheshwari ji is come. Bas video on pani paadungama. 2 minutes wait பண்ணுங்க sir. Adari na patta? Yes, sir. Sorry, okay. Adukku okkara sonna adukku paattu mudikiren. Okay. सारे जाके मालिक तेरा आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है. सारे जाके मालिक हम क्या पा रहा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है. हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है. हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है. किस्मत है वो हमारी,
किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, हाथों को हम दुआ की आखिर में हलाए, कैसे सजदे तेरे आकर सर को ही हम झुका के, मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सा आई थिंक राज जी के इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया. इट्स सम प्रॉब्लम इन राज जी इंटरनेट. तो ओके. तेरा खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, रोकर कटे आज कर कटती है जिंदगानी, तो गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। धन्यवाद। धन्यवाद राज जी, बहुत धन्यवाद. सुंदर गाया आपने. थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी. नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज श्रीमती उमा महेश्वरी जी. हाँ यस सर. आत्मा रामानंद रमना अच्युता केशव हरि नारायण, आत्मा रामानंद रमना अच्युता केशव हरि नारायण, பூத்தமல போல புன்னகை புரிவாய் பூரண சாந்தியை மழையென பொழிவாய், துஷ்ட ராட்சசரை தூயிருடன் கொய்வாய், துருபதி முனிவரை நிருபரச் செய்வாய், ஆசிரம சிந்திகள் அம்பர் களிப்பாய், அவனியை காத்திட அவதரித்தாயே, ஆத்மா ராமானந்த ரமணா அச்சுதா கேசவ ஹரி நாராயண, பவபய ஹரண வந்தித சரண, பவபய ஹரண வந்தித சரண, रघुकुल भूषण राजीव लोचन, आत्मा रामानंद रमना अच्युता केशव हरि नारायण, आत्मा रामानंद रमना. थैंक यू सर. बहुत बहुत धन्यवाद जी.
ரொம்ப நன்றி, you, நல்லா sir. பாடுனீங்க. Very nice. Thank you, sir. Thank you, ma'am. So, anybody interested to sing? Yes, sir. நீங்க பாடுனீங்க இல்லம்மா, வேற anybody else? Giridhar ji? I'm not comfortable with my throat. Okay, okay. Sorry, No sorry. problem. Let me sing, sir. Then we have 3 minutes time. Oh, nice. Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Ramanarayanam Janaki Vallabham. Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Ramanarayanam Janaki Vallabham. कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं. अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणम जानकी वल्लभम. कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं. अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणम जानकी वल्लभम. कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं. अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणम जानकी वल्लभम. कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं. अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणम जानकी वल्लभम. नाम जपते चलो काम करते चलो, हर समय कृष्ण क्या ध्यान करते चलो. अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणम जानकी वल्लभम. याद आएंगे उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी. अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणम जानकी वल्लभम. अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणम जानकी वल्लभम. धन्यवाद जी. Very good. Thank you, बहुत Raji. अच्छा. Our next program is Mataji's Pravachan. Mataji. Om Namaste. Namaste, Om. Mataji. Namaste. Namaste. Now we will proceed for Ramayana. Shri Ramchandra. Regarding Ramchandra, and have you remember who did the yajna for these children's? Who was the rishi who did this yajna? Havan, yajna. Rishi Shringi. You remember, but I am asking to kids. Children. Rishi Shringi was Vasisht organized, but Rishi Shringi did this yajna. He was a specialist of Putreshti yajna. Then these 4 children took birth.
And after the birth, the whole palace was resounded with the cries and with the screams of these children. There was no cry, no resounding, no screams in the palace. But after this birth, the birth of 4 children, there was everywhere was the happiness, and there were celebrations for more than 1 month. Like this, there was no darkness. There was the lightning or all these things, because these were the princes of the Raja, king, not the common man. These were so there were many celebrations in the palace. And all the 4 children were playing like brothers, real brothers, and there was no difference between 3 queens mothers. All were the elder mother, younger mother, or eldest mother, like this. There was no difference. Shri Ram was considering everyone like a mother, not only Kaushalya. Like this, Bharat and Lakshman and Shatrughan, all was considering all the mothers like real mother. There was no difference between their behavior. And like when they were growing up, the children were growing up, and when time came, and there was the Upanayan Sanskar, Yajñapavita Sanskar. It was 2 days. Today we, I think in South India, there is celebrations of these all sanskaras. Yes, Jat Karma Sanskar, Yajñapavita Sanskar, and Namkaran. Namkaran Sanskar is in North India also, it is common. But all this Jat Karma Sanskar and Yajñapavita is not common. But there all princes were adorned with this Yajñapavita Sanskar. You know what is the Yajñapavita? Yajñapavit and Upanayan is the same. Upanayan or Yajñapavit is the same sanskara. What's the significance of this sanskara, you know? Lakshmi, Upanayan- you had this sanskara, Upanayan sanskara, Yajñapavit sanskar? No? No, madam. No. We don't. It is, I think, girls, you don't do for girls, only for boys. Yes, madam. I think it is for boys only. But we are not. What we can say is we are not in the top 3. Yeah, but it is recommended for To have. all 3 Okay, three we groups, had 3 varnas, mm, Brahman, Kshatriya, and Vaishya, because actually these varnas are dependent on the qualities of a child. It should not be followed the birth on the family, because if one child is not able to grasp knowledge, his intellect is not so capable to get knowledge, then it is a wastage. And like this, who has the interest in gaining knowledge, he is a Brahman who is the brave and who has the who is interested, who is capable to protect others, and he is enthusiasm and like this courage in his nature, then he should be the Kshatriya children. And like this, who is interested in earning money and not getting knowledge, not protecting others, or not enthusiastic, then he many children, you know, by birth are very interested in earning money or doing this calculation or all these things, maths or
like Because this. there also we need knowledge and Twice, the yes. interest is towards the business. In business or all these things. So this is, then he should be encouraged to earn money, and he should be protected like this in army or in all these things. That depending all these qualities of children, then in Gurukulas also Guru give the name of Varna every child. Many people like this. Now we will see that in this Ramayana also, Rama's life, there were two gurus, Vasishtha and Vishwamitra. Guru Vasishtha and Guru Vishwamitra. Vasishtha was the Purohit of Raj Purohit. He was the guru of Raja Dashrath also. He was Raj Purohit Raja. Raja took every type of instruction and guidance from the Brahman. This Vasishtha. Vasishtha was actually Brahman, Brahman Guru. And today we think that dharma and rajniti, this politics should not be combined, but our politics should be concerned with this dharma also. That's why in old time, when politics is concerned with dharma, religion, then Rajas also goes on right path. He protects his people in the Raj, and he is not only in his only luxuries, or he is not taking all his what we should say materialistic only. He did all types of good works in his kingdom also. So thus this Vasishtha was the actually Brahman Guru, and Vishwamitra was the Raj Rishi. He was Brahma Rishi, Vasishtha was Brahma Rishi, and Vishwamitra was the Raj Rishi. Raj Rishi, he was by birth, he was Raja, Raj Rishi, Kshatriya. Vasishtha was Brahman and Vishwamitra was Kshatriya. But after some time, when he was grown up and after getting knowledge, seeing all these things, after that he left all the weapons and the army, this what we should say, wars, all these things. And he went to the jungle for tapasya, for doing sadhana and tapasya and yajnas also. At that time, yajnas was very, very common. Every rishi used to do yajna, different types of yajna. And Vishwamitra also lived, he used to live in the jungle. He left his kingdom and went to the jungles and did tapasya. But when he was doing yajna in the jungle, then many types of demons, Rakshasas were coming there, and they were interrupting him. How have you heard about this? How the demons were obstructing? They Rakshas kill different mans in the jungle, and animals also, and then they put flesh of different animals and different types of flesh in the yajna. Like this, yajna becomes impure. Their yajna should be pure. You do puja, Lakshmi and all these children who are there, their names are Vishal. We do puja with purity.
there should not be impurity in our yajna, impure things. We should not put impure things. You do yajna every Sunday, and you see we put ghee, pure ghee, we put samagri, pure samagri, and we should see that there should not be any insect or worm in our samagri, in our things which we offer in the yajna. That's why, because there should not be violence in our puja, in our yajna. But these Rakshas demons were doing this interruption and obstruct. They didn't want to do all these good things because they are Rakshas. Who are Rakshas? Who are against the humanity. Human being or devatas are, who are devatas, deities are all who protect others, who gives something to other, that is called, he is called devata. Devata is not by structure, they are not different. Structure is the same, like a human being. They have also 2 eyes, 2 ears, nose, and like this. Rakshasas also like this. But their nature is different. Who give, their nature is to give others and protect others is the deity, is the devata. And who kill others, who cheat other, and who want to hurt others is the Rakshas. That's why those Rakshas who were sent by the Ravana in the jungle, in the forest, and they were interrupting Vishwamitra, and they want that he should not do yajna and he should go away from there. That's why then Vishwamitra was, because he has the oath that he will not take weapon in his hand and he will not do war, then he came to the Dashrath, Raja Dashrath, because it is the duty of Raja to protect their people. And then Vishwamitra came to Dashrath and prayed him to give them this, their princes to protect them, to Rama. Okay? Next time we will say because Rama, Bharat, Lakshman, and Shatrughna were taking education, weaponry training from Vishwamitra, and other education from Guru Vasishtha in the Rajmahal. Okay? माता जी थोड़ा बताइए, उपन्य संस्कार जो बताए ना, बच्चों को पता नहीं होगा, मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं है, क्या होता है? हाँ, इसको हम करते हैं before taking, when boy started to get knowledge, education. Like today, education for beginning education, there is a sanskara. In old days, there was not schooling like today's. There children go to Gurukulas. They leave their house and go to Gurukulas. In Gurukulas, they get knowledge of these Vedas also, Vedas Shikshas and other religious education also. Then before starting this, parents surrender their children to the Guru. And before starting this Vedas education, the Guru gave them the sanskaras, this upanayan. Upanayan mean is there is a thread that is hanged on the shoulder. There are 3 threads in a, may I show you? I have this upanayan. ये क्या जनिया होता है क्या? Janeyu. It is also called Janeyu, and Upanayan are also. It has 3 threads. Next time I'll explain this.
what is the significance of these three threads? Okay. It is like an oath. Then now a ceremony that now we are starting education, and Guru takes the responsibility of their students, their disciples for this. This is the ceremony for taking the knowledge and going to the Gurukulas, Gurukul house. Next time I'll explain what, why three threads are there. Indications of the three rinas are all these things. Right. Very Dhanyawad. பசங்களுக்கு ஏதாவது பசங்களுக்கு புரியுதாமா? மாதாஜி என்ன சொன்னாங்க உங்களுக்கு எல்லாம் புரியுதா? 1 minute ரமேஷ் ஜி. கொஞ்சம் 2 minutes interaction. 7th January from 7th January மாதாஜி வந்து ராமாயண் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ தொடர்ந்து எல்லாரும் இருக்கீங்களா? ஏன்னா தசரத் மகாராஜுக்கு ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை பொறுக்கல. ஸோ அது யஜ்யம் பண்ணாரு. இப்போ மாதாஜி சொன்னாங்க மகரிஷி சிருங்கி பண்ணாரு. அவர் வந்து அந்த யஜ்யத்துக்கு ஸ்பெஷலிஸ்ட். அவரோட ராமரோட அப்பா பேர் வந்து மகாராஜா தசரத். எல்லாருக்குமே தெரியும்ல? கை தூக்குங்க. ஓகேயா? ஓகேயா? சோ அவர் வந்து வசிஷ்டர் சொன்னாரு இந்த யஜ்யம் பண்ணா நீங்க அப்பா ஆவீங்க, யூ வில் பிகம் a father to your children. சோ அந்த யஜ்யத்துல வந்து சில கீர் போட்டுட்டு அந்த யஜ்யத்தை எடுக்கிறாங்க. சோ அது வந்து 3 ராணியும், ராணி பேர் யாருமா? இந்த தசரத் மகாராஜா 3 ராணிங்க யாரு? வீடியோ ஆன் பண்ணி வைங்க. ஆடியோ ஆன். 3 Ranis of Lord Maharaja Dashrath: Kaushalya, Sumitra, Kaikeyi. very Sumitra. good. Sorry, very good. Audio on panni vainga. 2 minutes interaction. You know everything. If you don't know, no problem. I will learn from you. You learn from me. Okay. So Ramara yaar pettanga? Lord Rama oda amma vande Kaushalya. Bharat oda amma Kaikeyi. and Lakshman Shatrughan Sumitra. எந்த யஜ்யம் பண்ணாரு? விஷால், you told which yajna did Maharaja Dashrath do to get putra? புத்திர சிருஷ்டி யஜ்யம் பண்ணாரு. அதுல இருந்து இவருக்கு 3 குழந்தை வந்தாங்க. அண்ட் ஏன் அந்த காலத்துல வந்து மகாராஜா தசரத் did not adopt a child? எதுக்கு அடாப்ட் பண்ணார் சைல்ட? குழந்தை அடாப்ட் பண்ணல. யோசிச்சு சொல்லுங்க. சயின்டிபிக் ரீசன். மகாராஜாக்கு அவ்வளவு வருஷமா குழந்தை இல்ல, அடாப்ட் பண்ணிருக்கலாமா? why he didn't adopt? மாதாஜி சொன்னாங்க. பூர்வஜா கேக்குறீமா? புரியுதா? சின்ன பொண்ணு புரியுதா? தசரத் ஒரு சந்தேகம், யாரோட பையன் கிட்ட அந்த ஜீன் இருக்கா? அதாவது அவர் செத்த பிறகு will he be able to rule the country? So that was one of the reason why he did not adopt the son. You understood? This is science. This is pure science. See how scientific our elders were in everything. Okay. So he said, I will only give birth to my children, and that child, because of being my child, will have the gene and the capability to govern the country. So that's the reason why Maharaja Dashrath and those kings of they did not adopt. And Maharaja Dashrath oda appa per enna? Father name of Maharaja Dashrath? Ajay. Right, Amma? Ajay. And அவரோட grandfather பேர் வந்து ரகு. ஏன்னா சில நிறைய இடத்துல பேர் மாறி மாறி வந்திருக்கு. But we will stick to one thing. Raghu was the grandfather of Maharaja Dashrath. राज जी आपका मोबाइल में अनम्यूट कीजिए. Yeah, suddenly it's going out. Suddenly in the yes. So Iniki, what did Mataji say today? Mataji na sonanga?
that Vishwamitra, so Raj Rishi Vishwamitra and Brahma Rishi Vasishtha were the two gurus of Maryada Purushottam Bhagavan Shri Ramchandra. Vasishtha, what was he? He was the Raj Purohit, the chief advisor to Maharaja Dashrath. Okay. And Raj Rishi Vishwamitra was by birth a Kshatriya. That's why you call him Raj Rishi. Right? Mataji said a beautiful point. Mataji आपने बहुत एक अच्छी point बोली. बोले आप माताजी अरुமையான point சொன்னாங்க. யாராவது note பண்ணாங்களா? Mataji said, those days the Rajas were good at politics, economics, and also spiritualism. What is the condition of today, the world? What, Vishal? Huh? Somebody reply. So Maharaja Dashrath was so knowledgeable, so spiritual. So a ruler has to be spiritual to do good, has to have the smartness to protect his empire from enemies. And what are the today rulers doing? Generally, without pinpointing anybody, if anybody talks of spiritualism, we feel we are cowards. Right, Amma? So see, அந்த காலத்துல என்ன கிரிதர்ஜி அரசியல்ல கூட ஆன்மீகம் இருந்தது. Exactly. They are two sides of the same coin. Politics and spiritualism is two sides of the same coin. So எல்லாரும் ஞாபகம் வைங்க, when you become active in public life, you do something for the country, society, be spiritual also. That will give you that will give you the strength to withstand the criticism of the world, and they'll make you do the maximum good to the country. Okay, appa? Right? So don't forget, note down your book. And anybody wants to say anything? Ramesh ji, aap kuch bolna chahte? Giridhar ji, Asha Mehra ji, Litania, Vishal, kuch Purvaja. You want to say something, Ramesh ji, before we wind up? Or you give the vote of thanks? Yes. Up he do. Sure. Thank you, one and all. Thank you for the bhajan participants, and thank you, Kanchan Mataji and everybody. Okay, so please be participating our Bal Bhajan Sandhya. Okay, thank you, one and all. Let us see you all in next week Bal Bhajan Sandhya. Thank you, Nanri. Nanri, Dhanyawad. Mataji और सबको